morning everyone. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Today's date is 1st July 2020 and day is Wednesday. I Samragi Mishra welcome you all after summer vacations. I hope you all enjoyed your summer vacations at your home with your family. So students, this is your first class which is English class, and first of all we will do orals. So take out your left hand like this and right hand like this. Now hold your both hand and speak with me. I am going to recite a poem, Cobbler, Cobbler. So now follow what I am going to do. Just follow it. Cobbler, cobbler, mend my shoes, get it done by 2:30. Stitch it up, stitch it down, then I will give you half a crown. We will do it again. Cobbler, cobbler, mend my shoes, get it done by 2:30. Stitch it up, stitch it down, then I will give you half a crown. Students, now we will do phonetics. So, look at the chart here and speak with me. Mr. A says, apple. Mr. B says, ball. Mr. C says, cat. Mr. D says, dog. Mr. E says, elephant. Mr. F says, flag. Mr. G says, giraffe. Mr. H says, horse. Mr. I says, ice cream. Mr. J says, joker. Mr. K says, key. Mr. L says, la, lion, the king of jungle. Mr. M says, mama, mango. Mr. N says, nana, nest. Mr. O says, orange. Mr. P says, papa, parrot. Mr. Q says, queen. Mr. R says, rose. Mr. S says, ship. Mr. T says, tiger. Mr. U says, umbrella. Mr. V says, vegetable. Mr. W says, watch. Mr. X says, Xmas tree. Mr. Y says, yeah. Mr. Z says, zebra. Students, you all have to learn the phonetics and rhyme at your home. Students, now this is your written class of English. Take out your notebook, open up the page and mention today's date and day at the right side of your copy. Today's date is 1st July 2020 and day is Wednesday. This is your classwork. So mention classwork CW at the top of the page. Now today's topic is capital letter alphabet A to Z. Capital letter alphabet A to Z. Now we will write here alphabet capital A to capital Z. Let's start. Students, you have to know one thing which is very important. Look at the lines. There are 4 lines. First red line, second blue line, third blue line and fourth red line. We have to never write on the fourth red line. We will never touch it. Okay? Always do writing in first 3 lines. First red line, second line and third blue line. Okay? So let's start. Our first alphabet is A.
So point your pencil at third line and go up, make a slant line and come down, make a slant line and in between of both lines make a slipping line like this, up, down, cut, A. Now what will come after A? B. A standing line and two half curves. One man, two fat stomachs. Alphabet B. What will come after B? C. A half curve like this, round stop, C. Then what will go after C? It's D. A standing line and a half curve. One man have a fat stomach. D. Then what will come after D? It's E. Standing line and three sleeping lines. First sleeping line, second sleeping line and third sleeping line. This is E. One man wearing hat, coat and no shoes. This is E. We have to write 5 letters in single line. Okay? After it, what will come? It's F. Standing line and 2 sleeping lines only. One sleeping line and second sleeping line. One man wearing hat, coat but no shoes. Okay? This is F. Next, what will come after F? It's G. First of all, we will make round stop C like this and small standing line like this. C holding a stick G. Okay? What will come after G? It's H. We'll make 2 standing line in some distance like this and a sleeping line between of them like this. 2 men saying hello hello. This is H. Now what will come after H? I. A standing line and a sleeping line at top and a sleeping line at bottom. This is I. What will come after I? It's J. A sleeping line, then a standing line, then take a small turn like this. This is J. After J, what will come? K. Standing line, a slant line like this, then a slant line like this. This is called K. K for kite. What will come after K? L. On a standing line, then one sleeping line. This is called L. Then after L, M. One standing line, then a slant line like this. Then go upside again with a slant line and then a standing line again. This is M. M for mango. And what will next to N? And for next to standing line and a slanting line between of them like this. N. What will come after N? It's O. A complete circle. O. O for owl. Then what will come after O? It's P. A standing line and a half circle in between 2 lines. P. After P, what will come? Q. A complete circle and then a mustache like this. Q. Then what will come after Q? R. Standing line and a half circle like this, then a slant line. R. What will come after R? S. A
like this, then a curve like this, S. What will come after S? T. A sleeping line and a standing line is called T. T for tiger. T for tiger. Okay, students. Now look at here. You have to complete all alphabets from A to Z. Complete this page. Then do same as in homework. Okay. Students, now your written class is over. Students, this is your second period. This is your Hindi period. First of all, we will do orals, Hindi orals here. So, take out your left hand like this and right hand like this. Hold your hands and speak with me. I am going to recite a poem, हाथी राजा बहुत बड़े। अब हम हिंदी की कविता हाथी राजा बहुत बड़े करने जा रहे हैं। Now down your hands, हाथ नीचे कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पे, कुर्सी बोली चटर पटर। हम उसको दोबारा करेंगे। We will repeat it again. Okay? हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। अब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। Here's a chart. Look at the chart properly. This is Hindi वर्णमाला। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। स्टूडेंट्स, ये हमारे आ से आहा तक स्वर होते हैं और स्वर के बाद का से ज्ञा तक हमारे व्यंजन आ जाते हैं। तो अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा, घा से घड़ी, अणा खाली, चा से चरखा, छा से छाता, जा से जहाज, झा से झंडा, इया खाली, टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डमरू, ढा से ढोलक, अणा खाली, ता से तरबूज, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, ना से नल, पा से पतंग, पा से फल, बा से बस, भा से भालू, माँ से मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लट्टू, वा से वक, शा से संजम, शा से षटकोण, सा से सपेरा, हा से हाथी, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी। ये हमारी वर्णमाला है। हमें अब आपको कविता और वर्णमाला अच्छे से लर्न करनी है। अपने पेरेंट्स का फेवर ले करके, उनसे सपोर्ट ले करके आप राइम, कविता और वर्णमाला घर में
दिन में 2 बार भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर हिंदी रिटन क्लास, सो टेक आउट योर कॉपी, ओपन दैट and mention today's date and day at the right side of the page. Today's date is 1st of July 2020 and day is Wednesday. Mention CW because this is your class work, na? So mention CW there. C is class, W means work, class work. Now today's topic is वर्णमाला आ से आहा तक लिखिए। आ से आहा तक हमारे स्वर होते हैं। तो आज हम यहाँ पर स्वर लिखेंगे आ से आहा तक। पहला आता है अक्षर छोटा आ। छोटा से अनार। इसके बाद का अक्षर आता है बड़ा। बड़ा से आम। बड़ा के बाद जो अक्षर आता है वो है छोटी ई। छोटी ई से इमली। छोटी ई के बाद अक्षर आता है बड़ी ई। बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख के बाद छोटे ऊ से उल्लू। आपको एक लाइन में 5 अक्षर से ज्यादा अक्षर नहीं लिखने हैं और एक लाइन करने के बाद आपको अगली लाइन छोड़नी है। उसके अगली लाइन में आपको लिखना है। छोटे ऊ के बाद आता है बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ के बाद कौन सा अक्षर आता है? री से ऋषि। री से ऋषि। री से ऋषि के बाद ए से एड़ी। ए से एड़ी। ए से एड़ी के बाद ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक के बाद ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद एक लाइन में हमारे 5 अक्षर आ गए। उसके बाद जो अगली लाइन है वो हमें स्किप करनी है, मतलब उसको हमें लीव करना है, छोड़ना है। उसके बाद आएगा उसकी अगली लाइन से हम लिखेंगे। और ओ के बाद क्या आता है? औ से औरत। औ से औरत के बाद अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। और अंग से अंगूर के बाद आहा हमारा आ जाता है खाली। आहा खाली। ये हमने आ से आहा तक स्वर अक्षर लिखे हैं। एक बार फिर से देखिए, हमें 2 हाफ कर्व बनाना है। थोड़ी दूर पे एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, देन दोनों को ज्वाइन करना है स्लीपिंग लाइन से, लाइक दिस। ओके, छोटा। अब छोटा के बाद आएगा बड़ा, तो पहले छोटा लिख लेंगे, उसमें एक और स्टैंडिंग लाइन बना देंगे तो हो जाएगा हमारा बड़ा। बड़ा लिखने के बाद छोटी ई। छोटी ई में एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, देन ए हाफ कर्व, देन अगेन हाफ कर्व, और उसके बाद एक नीचे ला करके इसको ऐसे बना देंगे छोटी ई। फिर छोटी ई के बाद बड़ी ई बनती है, तो पहले छोटी ई बनाएंगे और उसमें एक हम मात्रा लगा देंगे ऊपर, ऐसे घुमा करके एक मात्रा लगा देंगे, बन जाएगी बड़ी ई। उसके बाद छोटा ऊ। छोटा ऊ हमारा बनता है सिर्फ 2 हाफ कर्व से, छोटा ऊ। और छोटे ऊ के बाद आएगा बड़ा ऊ। हम बड़ा ऊ लिखेंगे, उसके लिए हमें छोटा ऊ लिखना होगा पहले, और
स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर ऊपर की तरफ से टर्न करके नीचे ला करके फिर एक हाफ कर्व बना देंगे। डी से ऋषि, ए से एडी, ए से एडी के लिए पहले हाफ कर्व, देन स्लाइट लाइन और उसके बाद ऊपर से ऐसे हाफ कर्व बनाना है। ए से एडी, ए से एडी के बाद ऐसे ऐनक लिखना है तो ए से एडी पहले लिखेंगे, उसके ऊपर एक मात्रा ऐसे लगा देंगे तो हो जाएगा ऐसे ऐनक। अब उसके बाद आता है ओ से ओखली, तो ओ से ओखली लिखने के लिए हम सबसे पहले बड़ा आ लिखेंगे और बड़े आ में जो आखिरी की जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर लास्ट स्टैंडिंग लाइन पर हम एक मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा ओ से ओखली। ओ से ओखली के बाद आएगा औ से औरत। औ से औरत लिखने के लिए सबसे पहले इसमें ओ से ओखली लिख लेंगे। ओ से ओखली लिखा, फिर एक और मात्रा ही उसी लाइन से, लास्ट लाइन से ही एक और मात्रा निकाल देंगे ऐसे तो हो जाएगा औ से औरत। और औ से औरत के बाद आता है अंग से अंगूर। अंग से अंगूर पहले छोटा लिख लेंगे और उसके ऊपर ऐसे एक बिंदी रख देंगे तो हो जाएगा अंग से अंगूर। अंग से अंगूर के बाद आता है आहा। आहा हमारा खाली होता है तो आहा लिखने के लिए पहले छोटा आ लिखेंगे, फिर उसके बगल में ऐसे राइट हैंड साइड पे 2 डॉट्स लगाएंगे, मतलब 2 बिंदियां रख देंगे। तो ऐसे आप आ से आहा तक लिखेंगे, क्लास वर्क में एक बार लिखेंगे और उसके बाद यही आप एक बार अगले पेज में होमवर्क लिखेंगे। आपको सेम वर्क जो है वो होमवर्क में करना है। आपको राइटिंग नीट एंड क्लीन अपनी रखनी है और पेंसिल शार्प करके वर्क करिएगा। ओके, तो शार्प योर पेंसिल एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड वेरी क्लीन। एंड वन मोर थिंग, learn Hindi rhyme and Varnmala twice in a day. Complete all your Hindi written work in proper time. Thank you. Students, this is your third period, which is maths period. So we will start our maths work, written work. Open up your notebook and write today's date, which is 1st July 2020 and date Wednesday. Mention in the right side of the copy and mention CW, C class work, C class W work, that is CW. This is your class work. Students, our today's topic is forward counting 1 to 20. Students, you better know what is the meaning of counting. Counting means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 1, 0, 10. So we will do today forward counting 1 to 20. What is the meaning of T and O? T stands for tens and O stands for ones. When digit is single, it comes to under of ones. If digit is double, it comes to under of tens and ones. As like I am taking our number 1. This is a single digit. 1 is a single digit. As you can see, 1 is a single digit. So we will place it under of ones like this. Okay. And 1 and 0, 10 is double digits. 1 and 0, 10. There are 2 digits, na? 1 and 0. It will be come under tens and ones both. So I am going to write here. Look at the board properly. Afterwards, what will come? 2. After 2, what will come? 3. After 3, 4. After 4, 5. After 5, 6.
and then 7. After 7, what will come? 8. And after 8, 9. And then 1 and 0, 10. So there are 2 digits. It will be right under T and O. 1, 0, 10. This line is clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 1, 0, 10. What will come after 1, 0, 10? It's 1, 1, 11. So write it here. 1 and 1, 11. Then 1 and 2, 12. Then 1 and 3, 13. Then 1 and 4, 14. Then 1 and 5, 50. After 15, which is it will be here? 1 and 6, 16. After 16, it's 1 and 7, 17. After 17, 1 and 8, 18. After 18, 1 and 9, 19. And 9, 19. Then after 2, 0, 20. 2, 0, 20. This line is also complete. 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 14, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19 and 2, 0, 20. This is forward counting from 1 to 20. That is done here. You have to complete it in your copy. This is your classwork, students. Do same as homework. Do same in your homework. Writing should be neat and clean. And remember one thing very well. Always touch bottom line in maths block. Okay? Bottom line. Always touch bottom line in maths block. Your today's math class is over. Students, this is your fourth period, which is conversation period, and today's topic is myself. Students, this is your oral period. No need to write anywhere. That is already given in your syllabus. You can take help from there. Now I'm going to explain few questions. This is about myself. Myself means me. Me means I. When someone asks some questions about myself, how to answer it, I'm going to tell it to you. Look at the board. Our first question is, what is your name? What is your name? This is the very first question. When someone meets us, then he asks or she asks to us, for very first question is this. What is your name? You have to answer it. My name is. My name is. And then speak your name. Okay? My name is. Whatever your name, if your name is Yashi, Ayushi, whatever your name, just speak it here. Okay? Our next question is, what is your father's name?
What is your father's name? You know about your father's name, right? You know about your father's name? Father means daddy, papa. You know about your daddy's name, right? So, you can speak that my father's name is Mr. Then speak out your father name. My father's name is Mr. Then your father name there. Okay. Our next question is, what is your mother's name? What is your mother's name? Students, you know about the meaning of mother? Mother means mummy, mama. Okay. So what is your mother's name? That means your mother name. You can say my mother's name is Mrs. Then take your mother's name there. Students, always remember that when we speak out some special names, some respected names and our elders' name, we always put Mr. and Mrs. there. If there's a man, use Mr. If there is a girl, use Miss. And if there is a woman, use Mrs. So, I'm going to repeat it. Look at the board properly. All questions are written here. Our very first question is, what is your name? You have to say, my name is, then speak out your name. Then our next question is, what is your father's name? Father's name means daddy's name, papa's name. You have to speak, my father's name is Mr. Then your father name here. Next question is, what is your mother's name? Mother, mama, mummy, ma. So you can speak, my mother's name is Mrs. Then speak out your mama's name. Okay, this is your conversation class. Learn these 3 questions very well. This is about yourself and the topic name is myself. So students, your conversation class is over and do complete your all written works in Maths, Hindi and English and learn all oral works, English rhymes, Hindi rhymes, phonetics, Varnamala and conversation. Do complete all your today's homework in neat and clean handwriting and do complete your all work regularly. So, your today's class is over. We will meet in our next class. Till then, take care, bye-bye and thank you.